Hi guys, welcome to Manoeuvre Education. So today I'm going to discuss few interesting questions from maths which will be very helpful for MCA entrance examinations like NIMCET, MCACET and other entrance examination for MCA. And today our specific topic is differential equation. So let's start with this question. We have to find the solution of e raised to x plus 1 y dy equal to y plus 1 into e raised to x dx. देखो अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप नोटिस करोगे सॉल्व करने के लिए तो ये सारे टर्म्स x में है, ये टर्म्स y में है, ये सारे टर्म्स y में है और ये टर्म्स x में है. सो यू कैन अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? यू हैव टू जस्ट सेपरेट द वेरिएबल्स. मतलब y को एक तरफ आप ऐसे लिख सकते हो और x को दूसरी तरफ, यानी कि यू कैन राइट लाइक दिस e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस 1 dx. नाउ if you want to solve this equation, you can easily write 1 minus 1 upon y plus 1 into dy, and we have e raised to x upon e raised to x plus 1. Okay, now you have to integrate both the sides. On integrating both sides, we will get integral of 1 minus 1 upon y plus 1 dy, which is equal to integral e raised to x upon e raised to x plus 1 dx. ठीक है, 1 का इंटीग्रल y होगा, 1 upon y plus 1 will be इंटीग्रल will be log y plus 1 is equal to. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो आपके पास एक फॉर्मूला है, या और यू कैन से देयर इज ए कोरोलरी दैट इफ यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल लाइक दिस f dash x upon fx dx, then this value is equal to log mod f of x plus c. This is the corollary that we can use in this question. That means कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर आपके पास डिफरेंशिएशन है, then you can directly write log of the function plus c. So here we can see this is the function and ये न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है. Then you can write log e raised to x plus 1 plus इंटीग्रल कांस्टेंट. इंटीग्रल कांस्टेंट को अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इन लॉग टर्म, लॉगरिथमिक टर्म. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आपका आंसर आ जाएगा. सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1 प्लस लॉग e रेज टू x प्लस 1 प्लस लॉग c. व्हेन यू सॉल्व दिस टर्म यू विल गेट y इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1 e रेज टू x प्लस 1 into c. ठीक है, और यू कैन राइट e रेज टू y इक्वल टू y प्लस 1 e रेज टू x प्लस 1 into integral constant c. When you compare this value, you can see the first one is the correct option. Let's move to the next question. We have to find the solution of the differential equation dy upon dx equal to e raised to x plus y plus x square into e raised to y. So here you can also separate these values like e raised to x into e raised to y plus x square into e raised to y. ठीक है, you can see e raised to y are common, so take common e raised to y, you will get e raised to x plus x square into e raised to y, right everyone? And here we have dy upon dx. Now when you separate the values, you can get dy upon e raised to y, which is equal to e raised to x plus x square into dx. Now integrate both side. ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड you will get integral of dy upon e raised to y is equal to integral e raised to x plus x square dx. ठीक है, अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो. ये टर्म्स का इंटीग्रल 1 अपॉन ई रेज टू वाई का इंटीग्रल हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू वाई, राइट? एंड द इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इज नथिंग बट ओनली ई रेज टू एक्स. सिमिलरली द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी. ठीक है, hence you can say c is equal to e raised to x plus e raised to minus y plus x cube upon 3. ठीक है, when you compare this value you can get second one is the correct option for this equation.
तो सबसे पहले आपको इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। If you know the formula, then you can easily solve this type of question. So first of all, you have to remember all the formula from differentiation as well as from integration. Thank you everyone. So if you are preparing for MCA entrance examination for 2022 and 2023, you can join our live classes, classroom, books, mock, GD, VAT interview and mentorship. You can call on 8828581455 for online and live classes. And if you are Mumbai based, you can join our Borivali center, Vasai center and Dadar center. Please like, share and subscribe our YouTube channel, and you can also join our social media platform like Facebook, Instagram and Telegram. Please check the link in the description for Google link and fill out the forms for more information. Thank you everyone.